because ट्रेन काफ़ी लेट थी. Okay, so time to ride Kratos after. And we finally have this. Okay guys, welcome to another vlog. Today is Monday and it is 10th of July 2023. So kal around after 3 o'clock I reached home and I was extremely tired because किसी ने मुझे ट्रेन में सोने नहीं दिया. I boarded the train at around 3 o'clock and उसके बाद 7 बजे सबने उठा दिया because मेरी middle birth थी and all that stuff. So I didn't really get some sleep. So कल मैंने आके थोड़ा relax किया. शॉर्ट्स वगैरह एडिट किए, कल का व्लॉग अपलोड किया एंड स्टफ लाइक दैट. बट एट द सेम टाइम बाय द टाइम यू सी दिस व्लॉग यू वुड हैव सीन प्रॉब्ली 1 or 2 पार्ट्स ऑफ आवर वीकेंड व्लॉग जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अमेजिंग बना था. एंड द गुड थिंग हियर इज a week to 10 days के लिए ही सही we are back to Mumbai because after this I have to go to Rajasthan for a couple of days again because जो मीटिंग या जो काम है वो हफ्ते 10 दिन बाद होने वाला है. So for now my plan is I want to improve the quality. I'm very clear on that. ये background में मुझे थोड़े changes लाने हैं. You know, I don't know what color combination should I use. You know what background props should I use and stuff like that. मेरा table white है. टॉप कैमरा है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे दे देता है. तो अभी से वंस अगेन आई मूव बैक टू 4K. मैंने आई थिंक एक छोटी सी मिस्टेक की थी कि आई वेंट टू 1080p एंड आई थिंक मेरे कैमराज उतने पावरफुल नहीं है कि 1080p पे उतनी अच्छी क्वालिटी एटलीस्ट यू नो मोबाइल फेसिंग पे दे. सो वी विल वर्क ऑन 4K. बट येस पोको X3 Pro तो अच्छा चल रहा है एवोल्यूशन X पे. अब उस पर नए रॉम्स ट्राई करेंगे एंड मैंने इसको भी पैक कर दिया है. तो कुछ भी करके आज Mi 11X को शिफ्ट कर देना है ताकि 10 to 15 डेज में ये वापस आ जाए हमारे पास. अब रही बात दूसरे डिवाइसेस की, यू नो आई एम थिंकिंग ऑफ चेकिंग आउट द Nord 3 अगर वो किसी शॉप में आया है तो. राइट नाउ आई एम गोइंग आउट बिकॉज आज मंडे है. मंडे को वैसे ही हम शिव जी के मंदिर जाते हैं और आज श्रावण का पहला मंडे है तो ज़रूर जाना चाहिए मंदिर. बहुत अच्छी बात होती है तो वो हम ज़रूर करेंगे. एंड किसी शॉप में अगर Nord 3 देखने मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. बट मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ नथिंग फोन 2 को लेकर. I really think I want to buy that phone. इसके अलावा there is one negotiation going on with a guy from कोल्हापुर जो उसके पास है iQOO 11 16256 बहुत अच्छे प्राइस में दे रहा है. तो अगर ये डील हुई तो you never know, रोड ट्रिप टू कोल्हापुर और बाइक ट्रिप टू कोल्हापुर और ट्रेन से जाएंगे पता नहीं. बट जो प्राइस में मिल रहा है even after having used the iQOO 11 for that price the 16GB RAM वाला iQOO 11 is a pretty good deal. So I might not miss out on it. For now, आज का day is going to be long because more than shooting videos, I am more interested in optimizing the setup and making sure it looks great, the quality looks great. So शायद नीचे के लिए अब कुछ wallpaper ले, बहुत सारी चीजें हैं which I might do. Okay, so time to ride Kratos after a week. या कल टाइम मिलेगा तो इसको वॉश कराएंगे. Disappoints as far as starting is concerned. Alright, so quick update here. Right now it is 6:39 in the evening and as you can see from my face, I'm not really ready to shoot anything right now because I'm researching on so many things since the last 2-3 hours. पिछले 2-3 घंटे से मैंने इतनी चीज़ें चेक करी है just with one motive, that is to give you guys great audio and video quality. At the same time मैं इस background का भी कुछ करने का सोच रहा हूँ. पहले मुझे माइंड में आया था कि एक wallpaper लगा दिया जाए and then I thought कि Adobe Firefly में काफ़ी editing options है तो we can try that. And finally अब जब मैंने अपने you know I saw a few of my old videos from the last 6 months and I saw my current videos, I realized that front camera का जो camera placement है I think that is you know off somewhere, वहाँ पे mistake है. So now it's 6:40, so I'm going to start editing the vlog part 1. Weekend पे जो हम लोग बाहर गए थे I had shot a lot of things, so it'll be interesting to edit that. थोड़ा टाइम लगेगा but at least आज shorts आएंगे and I really want to make a video on this thing, Poco X3 Pro Evolution X, because it's been a week that I've been using it and मेरा experience it's been very good. So I really want to give you the complete details on that. So today's day is going to be a mixed bag of things. I have ordered a case for the GoPro that will allow me to use you know it with mounts and OLX पे मुझे एक अच्छी deal मिल गई है for an adapter. So that is there. So vlogging setup almost GoPro का complete हो जाएगा. Moto vlogging के लिए I'll still have to order a mic. Okay, so शाम के 8:30 8:30 and we finally have this
मैं इसको अनबॉक्स करना चाहता था कैमरा के सामने बट कर दिया मैंने, रहा नहीं जाता चीज़ें खोले बिना। एनीवेज दिस इज व्हाट आवर GoPro लुक्स लाइक राइट नाउ। मैं आपको बता दूं दिस इज अ Ulanzi G9-4 प्लास्टिक केज। सो बेसिकली इट हैज 2 cold shoe mounts over here, cold shoe hot shoe जो भी बोलते हैं, यानी कि एक यहाँ पे you can mount a light and you can mount a mic over here. Over here is where the adapter goes. Now the reason I got this is for 2 things. One is convenience, of course, vlogging के लिए this becomes very very easy. 2 is safety. I dropped my GoPro day before yesterday when I was in Rajasthan. एकदम हल्के से scratches आए साइड में बॉडी के and I didn't want that to repeat. The only downside of this, जो कि easily fixable है अगर Ulanzi जैसी कंपनी चाहे तो they can fix it, is this is a plus point in a way. As you can, I don't know if you can see or not, but यहाँ पे फोकस कर ले भाई थोड़ा, हाँ ओके। सो यहाँ पे ये परमानेंट ओपनिंग दिया है, यानी कि मैं टाइप सी से डायरेक्टली इसको कनेक्ट करके यू नो आई कैन चार्ज लाइक दिस। एट द सेम टाइम अगर मुझे बैटरी भी इसकी रिप्लेस करनी है तो डायरेक्टली हॉट स्वैप हो जाती है बैटरी यहाँ से, राइट। नाउ द डाउन साइड टू दिस सेटअप, द ओनली डाउन साइड इज because this hole is there for convenience, it actually kills the waterproofness of this device. Waterproofness, if there is a word like that. So ये लोग क्या कर सकते थे कि भाई इजीली ये लोग एक जैसे GoPro का जो कवर है, मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। अभी दिस इज अ GoPro का साइड का कवर, दिस इज इजीली लाइक यू नो इट इज नॉर्मली स्टक लाइक दिस, यू कैन जस्ट पुल इट स्लाइटली एंड इट डिटैचेस. So this makes the GoPro waterproof. This is a battery door. So they could have done the same thing. They had to adapt the same design mechanism, and they could have tried to give waterproofness over here as well. ताकि ये you can just open it like this. खुल जा भाई. Yeah. Open it like this, pull it like this. और जब आपको ये cover, they can send the cover as an accessory. I don't know if it is already there. But because ये waterproof नहीं रहता, तो whenever I'm taking the GoPro on the bike, I will have to take it out of this case, connect that particular door, and then put it on the camera, which makes things a little difficult. But अच्छा है, at least my GoPro is safe now, and I think क्या चल रहा है, जुलाई है, दूसरा महीना तो हो ही गया बारिश का. So August, September, October, November to April, I don't really have to worry about rains because for 7 months at least it doesn't rain. So more than half the year, ये एक अच्छा lens protective solution है इसके लिए. So let me show you. This is how this is, and I think there's this ring which allows you to connect adapters as well. So जो mic अभी इसमें लगा हुआ है, I can connect that mic to this. So in all, this will become a very good vlogging setup for me. I think finally अगर हम इसकी थोड़ी settings और configure कर दे तो we will be able to determine what are the best settings for vlogging and moto vlogging. I'll tell you this setup is costing me close to 50k, but I'm very happy with it. One of the better investments, all thanks to my wife, because she has gone ahead and told me that if you're buy something new and keep it for a long time, give them good quality and stuff. She's a very big motivation for me, at least to continue this channel and make things amazing. For now, I think we will end this vlog because आज तो सब कुछ बिखरा पड़ा है and मैं चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ for you guys as I said. ये नया आया था तो I wanted to show you. At the same time, ये मैंने आपको एक पिछले vlog में बताया था एडाप्टर, ये मैंने Canon M50 के लिए भी मंगवा लिया है. So अभी और चेंजेस होंगे सेटअप में, मुझे और क्लैरिटी दिखेगी कि शूट के वक्त कैसी क्लैरिटी आ रही है and all that stuff. So this is everything behind the scenes. For now, I will end this vlog. I know आज का vlog ज़्यादा बाहर के बारे में नहीं था. Most of the time it was everything inside. But it's interesting. It's interesting. I'm working on making Evolution X review as I told you. And Meal MX भी ship हो रहा है और ये भी काफी exciting होने वाला है. I'll see you in the next one, guys. Keep smiling, keep supporting, share it with everyone. So bye.